चलो एक क्वेश्चन करो. A parallel combination of two air-filled parallel plate capacitors of capacitance C and NC. Though capacitance are there, they connected parallelly. Okay. C and C connected battery with a voltage source. Okay. उसका कैपेसिटेंस C है, दूसरा कैपेसिटर है NC है, उसका कैपेसिटेंस इज NC. Okay. It's connected parallel and connected with a battery of voltage V. Okay. V से connected है. When the capacitance are fully charged, ये पूरा चार्ज हो गया, fully charge हो गया, the battery is removed. Battery is removed. वही केस है ना हमारा removed वाला केस है. And after that, dielectric material of the dielectric constant K is placed between the two plates of the first capacitor. So what he done? He removed the battery and first capacitor में I am inserting a dielectric constant K. And second one तो same है. Second one तो NC, capacitance is NC. The battery is removed. What is the new potential difference of the combined system? New potential difference is how much? इसका V dash, दोनों same potential difference, right? V dash is how much? And you know, whenever charge, battery is removed, charge is constant. Q is same. किसका charge? Total system का charge is same as that of this one. Not right, friend? Same model. ऐसे written है. First इसका charge find करो. इसका system का charge. मान लो total charge is Q. So Q equal to C, we write C equivalent into V, right? C equivalent is how much? They connected parallel. So क्या होगा? C कॉमन ले तो N plus 1, बिकॉज ये दोनों ऐड करने का, राइट? NC plus C कॉमन ले तो N plus 1 into V. दिस इज चार्ज. ये चार्ज इधर यूज करो. टोटल सिस्टम चार्ज कितना होगा? हाँ, तो फाइंड करो इसका. इसका कैपेसिटेंस कितना बढ़ जाएगा व्हेन आई इंसर्ट डायलेक्ट्रिक? इसका कैपेसिटेंस विल बिकम Kc, राइट? कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा Kc. नाउ इसका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? C equal to Q by V, V equal to Q by C, equivalent. Since charge is same, battery is removed, right? Charge is same. ये चार्ज इधर यूज करो. कितना होगा? C times of N plus times of V by C equal to how much? Kc plus C कॉमन ले तो K plus N. इसे कैंसिल, इस आंसर. ओके, सेम मॉडल करने का. सो वो बताएगा कि बैटरी रिमूव, बैटरी रहेगा, वो बताएगा. एंड समटाइम्स विल टेल चार्ज इज सेम, मतलब इनडायरेक्टली बैटरी इज रिमूव. ये केस है. तो लास्ट केस बचा है. व्हेन बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड एंड डायरेक्ट्रिक इंसर्टेड स्लोली. इसलिए क्या किया? बैटरी रिमूव करके आई इंसर्टेड डायरेक्ट्रिक स्लोली स्लोली स्लोली. अभी क्या करूंगा? बैटरी कनेक्ट करके आई विल इंसर्ट डायरेक्ट्रिक. ओके. So here also we will see before and after parameters what will happen. And initial parameters को we call as not, right? पूरा not लगाएंगे. Plus minus. So इधर plus Q naught minus Q naught. Electric field को I call as E naught. And capacitance को we call as C naught. And potential difference को we call as B naught. Okay. So initial potential is V naught. And initial capacitance is C naught. And C naught कितना? Epsilon naught A by D. We let all initial parameters. Then we will insert dielectric. What will happen? We have to see. So initial charge is Q naught. And Q naught is C into V, right? C naught into V naught.
and E electric field EI is E naught. And here C and V may we are writing initial energy will be half. I call this U naught, half C naught V naught square. This is the initial energy. Okay. We are writing in terms of potential. Why we will see. Okay. Now battery connected means which variable is constant? Battery connected means which physical quantity is constant? Charge. No. Battery remove किया तो charge is constant. Voltage. Huh? V. Potential. Potential remains constant. बैटरी देखो बैटरी में अक्रॉस में इनिशियल 12 वोल्ट्स है. आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद आल्सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस प्लेस इज 12 वोल्ट्स ओनली. आफ्टर 10 टाइम्स के मतलब 1 आवर के बाद आल्सो फीचर अक्रॉस 12 वोल्ट्स ओनली. So potential is same always. So battery connected means here V same is constant. Okay. Now I started inserting a dielectric same like before only. I insert a complete dielectric constant K. So first step क्या होगा? Polarized होगा. So minus 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 here coming. Here plus 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 coming. Okay. Now ये प्लेट इसको इस तरफ खींचेगा पॉजिटिव नेगेटिव. ये प्लेट इस तरफ खींचेगा. Finally the force on a capacitor will be downwards, right? Same kahani. But we should not insert dielectric very very fast, right? So उसके लिए we are externally we are applying a force in the exactly opposite direction, which is almost equal to that of electrostatic force. Okay. Now parameters देखेंगे क्या होगा. So VF final potential is same V naught. Potential is same बोल के बोला. And CF क्या होगा? कितना होगा सात्विक सात्विक बोलो. Capacitance कितना होगा? When I insert dielectric of dielectric constant K, capacitance is how much? Epsilon naught A by D. Since I inserted dielectric, K times बढ़ जाएगा. K times बढ़ जाएगा. Normal formula only epsilon naught A by D. When I insert dielectric, we have to multiply with K. So therefore, it will become K times of C naught. Capacitance तो बढ़ेगा compulsory. I told right. Dielectric में small hair-like structure also लगाए तो भी it will increase. Okay. Now, final charge कितना होगा? CF into VF, right? So CF is K times of C naught into VF is V naught. So C naught V naught is nothing but C naught V naught is nothing but Q naught. So देखो K times of Q naught. Charge भी बढ़ गया. Charge is increasing because of battery connected है ना. Charge is increasing. Okay. And electric field कितना होगा? Potential also V naught है. मतलब electric field is also it will be E naught. Electric field is same. Because potential and D is not changing, right? D is same, potential is same. When you do the relationship between potential difference and electric field, we'll get same thing. Okay, now final energy क्या होगा? Final energy will be half CF VF square. So since potential is constant, that's why in terms of potential we are writing. Okay, energy. So half CF is K times of C naught into VF is V naught. So V naught square. So half C naught V naught square is nothing but U naught. That means देखो K times of U naught हो गया. देखो energy बढ़ गया. Energy got increased by K times. So if they ask what is the change in potential energy? U final minus U initial. Final potential energy is K V naught, K U naught. So U naught common ले रहा हूँ. K minus 1, right? U naught के जगह में half C naught V naught square times K minus 1 is a change in potential energy. This will be positive, right?
here potential energy increase हुआ, where is that energy coming from? Before when potential got decreased, where is that energy went away to do the work, to pull the slab? Here also same kahani. Some energy should be lost because of this slab work. Capacitor is doing work to bring the slab down, right? But if energy is increasing here, where is that energy went away? Potential energy is increasing. Well, where is that energy coming from? Because of battery. Battery is giving the energy. Battery is supplying the energy to the system. That's why initial energy say final energy. We are inserting dielectric, right? At that time, it is increasing by k times. So, देखो, what is happening? Where is that potential energy came from? Means the potential energy coming from the battery. इसमें क्या क्या हो रहा है? Potential energy increase हो रहा है, and work is also obtained. Work is obtained. Why? Because ये भी सेम थिंग, राइट? देखो, फोर्स ऊपर, वर्क एक्सटर्नल फोर्स का, फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, वर्क डन इज नेगेटिव. वर्क डन इज नेगेटिव मींस वर्क इज obtained फ्रॉम द सिस्टम. दैट इज द मीनिंग. वर्क डन कभी भी नेगेटिव है तो वर्क इज obtained फ्रॉम द सिस्टम. ओके, सो दो थिंग्स आर हैपनिंग नाउ. आपको क्लियर पता चलने के लिए वी विल डू वन थिंग. ये हो गया, देखो, इट इज कमिंग फ्रॉम द बैटरी, सोर्स ऑफ एनर्जी, दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी. नाउ बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट. बैटरी ने कितना एनर्जी दिया, विल ट्राई टू फाइंड, देन विल सी उसमें से कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर हो रहा है, एंड कितना एनर्जी वर्क इज obtained. वी विल सी दैट. ओके, चलो. एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी. सो दिस इज द प्लेट्स. connected with the battery source V and 0. Okay. So ये वाला देखो, इनिशियली अभी चार्ज क्या हो रहा है व्हेन आई कनेक्टेड बैटरी एंड इंसर्टिंग अ डायरेक्ट्रिक, व्हाट इज हैपनिंग? चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय k टाइम्स, राइट? चार्ज इज इंक्रीजिंग बाय k टाइम्स. मतलब मान लो हियर बैटरी इज डूइंग वर्क, क्या कर रहा है? इधर स्मॉल पॉजिटिव dq चार्ज इट इज ब्रिंगिंग हियर एंड सेंडिंग टू हियर. थिंक लाइक दैट. द चार्ज इज कमिंग. इनिशियल चार्ज कितना था, फाइनल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज कितना है? इनिशियल चार्ज इज q नॉट, राइट? फाइनल चार्ज हाउ मच यू गॉट? Final charge you got as k times of q naught. That means here final charge is minus k times of q naught, right? मान लो the dq battery क्या काम कर रहा है, battery is doing work, we will be bringing the dq charge and putting here, dq charge and putting here positive charge. So इधर positive बढ़ता जाएगा, इधर negative होता जाएगा. Okay, that is doing work battery ने. Okay, that is the thing. Now I am interested to calculate the how much work done by the battery. Then only that is nothing but energy only. एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी. ओके, नाउ कितना चार्ज ट्रांसफर किया उसको, मान लो चार्ज Q. Q इज द चार्ज ट्रांसफर. लिखो स्मॉल q, नेट चार्ज ट्रांसफर्ड, नेट चार्ज ट्रांसफर्ड. सो Q इज इक्वल टू फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज. सो कितना होगा? k टाइम्स ऑफ initial charge is q naught, right? Initial charge is q naught, right? Before charge q naught था, final charge क्या हो गया? k times से बढ़ गया ना, with after inserting dielectric k times बढ़ गया ना. So क्या होगा? So k times of q naught minus q naught. So q naught times k minus 1. This is the charge transferred by the battery. Is that understood? Charge transferred by the battery. Now I want to find the work done in order to move the charge from 0 to V. Potential difference का definition use करके work done find करो. The charge is getting transferred from 0 to V. याद है वाला? 0 to V. The charge is getting transferred. I want to move the charge from 0 to V. So what is the potential difference formula? V final minus initial is equal to work done by battery in order to bring the charge from 0 to V upon Q. Right? Yeah. So work done by battery is equal to Q times of V. Right? इसका V नॉट है ना, ये V नॉट मान लो, बिकॉज एयर में इनिशियली we thought of V नॉट, राइट? V नॉट.
नाउ क्यू के जगह में सब्स्टिट्यूट करे वाला क्यू नॉट इंटू के माइनस वन इंटू वी नॉट. ओके, एंड व्हाट इज क्यू नॉट? इनिशियल चार्ज फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटर में? सी नॉट इंटू वी नॉट. सो व्हाट डन बाय बैटरी इज इक्वल टू सी नॉट वी नॉट, वी नॉट इंटू वी नॉट स्क्वायर इंटू के माइनस वन. दिस वर्क डन बाय बैटरी इज नथिंग बट एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी ओनली. कितना काम किया इज नथिंग बट स्टोर्ड एज एनर्जी ओनली, राइट? सो एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी supplied by the battery is equal to C naught V naught square into K minus 1. This much energy is supplied by battery. Battery is giving this much of energy. Okay. Finished? Complete? Okay. Now देखो here. ठीक है कंप्यूटर. हाँ now देखो that means what is the energy supplied by battery? Energy कितना था? K minus 1 into कितना? I can write like this C naught V naught square. This is energy supplied by battery. उसमें से what is the change in potential energy कितना होगा? Your gain in potential energy is how much? Formula क्या था? Gain in potential energy we derived, right? Change in potential energy is how much? Before में? हाँ बोलो. Half किया ना before derivation. Half C naught V naught square times K minus 1. देखो if you see K minus 1 C naught V naught square, उसमें से आधा energy is gaining the potential energy. So that capacitor is storing the potential energy, half of the energy. Okay, and remaining half of the energy is work done by the capacitor. वो काम कर रहे हैं ना पुल करने के लिए, स्लैब करने के लिए. रिमेनिंग हाफ, सो कितना होगा? हाफ सी नॉट वी नॉट स्क्वायर इंटू के माइनस वन. दिस वर्क डन बाय द कैपेसिटर. तो मैं ये दोनों ऐड करने से दिस मच एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड. बैटरी इज गिविंग दिस मच ऑफ एनर्जी, उसमें से आधा एनर्जी इज गेटिंग टू स्टोर गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर एंड रिमेनिंग हाफ इज डूइंग द वर्क टू पुल द स्लैब. सो एग्जाम में स्मॉल स्मॉल थिंग्स, मतलब व्हाई वी आर डूइंग दिस वन डेरिवेशन वगैरह, दे विल टेल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी इज 20 वोल्ट्स. उसमें से हाउ मच गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, हाउ मच वर्क डन बाय कैपेसिटर मींस जो ऑप्शंस मिलेगा 10 15 ऐसा पूरा में ऐसे मिलेगा पूरा. उसमें से 10 एंड 10 विल बी द आंसर. 20 joules ऑफ डूइंग गिविंग द एनर्जी मींस एग्जैक्टली 10 जाएगा इसमें, एग्जैक्टली 10 जाएगा. सो आधा आधा विल बी शेड. One is storing the potential energy, capacitor stores potential energy, right? Store करेगा. Other one is doing work करने के लिए वो काम, मतलब some energy is getting lost in that way. Okay. Sir, Tell me. sir, how efficient is this circuit because half of the energy is being lost? Getting lost, right? See, ये पूरा आप लोग generally क्या है, for calculation purpose these all things are they are doing, these all things. But actually in the industry में dielectric they will make. उसके ऊपर सिंपली दे विल कनेक्ट ए कैपेसिटर, मतलब उसके ऊपर लैमिनेटेड करेगा वो लोग पूरा. सो ये अलग है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेशन पर्पस के लिए. बट इंडस्ट्री में इफ यू सी सम वीडियोस आल्सो दे विल पुट ए डायरेक्ट्रिक फर्स्ट, दे विल पुट ए मेटल, उसके ऊपर दे विल पुट ए प्लेट्स एंड फिक्स करेगा उसके ऊपर, सो कैपेसिटर बन जाएगा. ओके, तो अंडरस्टूड. ये वाला आपको ये बिट्स में पूछेगा, स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस दे विल आस्क इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आस्क. ओके चलो एक क्वेश्चन करो. A parallel plate capacitor of capacitance 90 picofarads is connected to a battery of 20 volts. Okay. So capacitor है. It connected with a 20 volts battery. And capacitance is how much? 90 picofarads. Okay. C naught. Okay. If the dielectric material of dielectric constant K is inserted between the plates, the magnitude of the induced charge will be how much? Battery remains same. So क्या किया अभी? बैटरी तो सेम है, बैटरी तो सेम है 20 volts, मतलब आई एम नॉट इन रिमूविंग द बैटरी, आई एम इंसर्टिंग अ डायरेक्ट्रिक
with dielectric constant K is equal to 5/3. कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा ना, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा. ही इज टेलिंग इंड्यूस्ड चार्ज का फॉर्मूला याद है? टेल में. इंड्यूस्ड चार्ज इन द डायरेक्ट्रिक में QI. QI is equal to Q naught into 1 minus 1 by K. 1 minus 1 by K. Q times of 1 minus 1 by K. हाँ, नो करो. तो इसका चार्ज फाइंड करो. क्यों नॉट बोलते, इस डायरेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद चार्ज इंक्रीजेस, राइट? वो चार्ज फाइंड करो. I'll give options. These are JEE Main questions only. 0.9 nanocoulomb, 1.2 nanocoulomb, 0.3 nanocoulomb, 2.4 nanocoulomb. चार्ज इसका डायरेक्ट इंसर्ट करने के बाद फाइंड करो. कैपेसिटेंस भी उसका ही ओनली फाइंड करो. कैपेसिटेंस इसका नहीं है, इसका आफ्टर इंसर्टिंग डायरेक्ट्रिक का पूरा. Is it 1.2 nanocoulomb? देखेंगे. यू फाइंड चार्ज. इधर चार्ज फॉर्मूला क्या है? हाँ, साथ कितना है ऑन द वीडियो साथ. व्हाट इज चार्ज फॉर्मूला सात्विक? इधर चार्ज कैसे फाइंड करेंगे? C equal to Q by V and Q equal to CV. So Q is equal to, इसका C will be K times of C हो जाएगा. कैपेसिटेंस मतलब C डैश फाइंड करो. मान लो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, C डैश इंटू V लगा रहा हूँ. C डैश इंटू V. C डैश is nothing but K times of C naught, right? So K is 5/3. 5/3 times of 90 picofarads. So 30, 1500 picofarads. So 1500 into कितना? V is 20, right? तो कितना होगा? 30, 1, 2, 3 into 10 power of minus 12. This is charge, coulombs. Now substitute here Q की जगह में. This is answer 1.2. Correct. So 3000 into 10 power of minus 12. 3 only, 3 zeros only, right? 1, 2, 3. 30,000 आ रहा है और 3,000. So 3000. हाँ, 3,000. 15 is a 0, right? हाँ हाँ, सर्च करो कितना है आंसर. सर्च करो इधर. 3000 into 10 power of minus 12 into 1 minus 1 by K के जगह में
इट इज 5/3, मतलब 3/5 होगा. So 5 minus 3, 2/5. So 3000 into 10 to the power of minus 12 into 2/5. 5 6 0 0. So 1200 into 10 to the power of minus 12. So ये कितना होगा? 12 into 1.2 into 10 to the power of minus 9. Pico nano coulomb में, ये coulomb में. So 1.2 nano coulomb. Yes. Okay. So by this, your chapter successfully done. Okay. 1 minute.